a motion of a particle with a constant velocity in a circular path in a vertical plane. There is a particle whose mass is m. This is whose mass is m, and that is a vertical plane, and that is a horizontal plane. Vertical plane, and there is a circular path. On the circular path, the particle is moving. At this time, it is at the lowermost point. तो हमने इसका क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया यहाँ पर. This is a particle. यहाँ पर particle है. Weight is of this particle is always at vertically downward. Reactions is at normal to the path, normal to the point, and acceleration of these particles that is moving with a constant velocity, means rate of change of dv upon dt. जो magnitude है, which is represented by tangential acceleration. dv by dt is equal to tangential acceleration. तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट मतलब क्या है यहाँ पर कि जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है. दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी. स्टैटिक वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है. सिर्फ क्या बचा है, नॉर्मल एक्सेलरेशन बचा. नॉर्मल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द center of a path. That is a normal acceleration. So we can write down sum of all the forces is equal to mass into acceleration. That is the equation of a motion. Take the force positive in the direction of acceleration. जो भी forces हैं जो acceleration की direction में है, that is positive. So what is the force? R is in the direction of acceleration. So we can write R positive. mg is acting downward, so minus mg. ठीक है, opposite to the acceleration is equal to mass into acceleration. What is the acceleration? That is a normal acceleration. So that is the result from the equation of a motion. You can find this result from by using the dynamic equilibrium. How we use the dynamic equilibrium? Okay, in the dynamic equilibrium, that is a particle. The weight of the body is acting downward, mg. Normal reactions is act normal to the point. And what is the inertia force? ठीक है, inertia force यदि acceleration है तो inertia force होगा. Inertia force is act opposite to the direction of acceleration. What is the direction of acceleration? This is the direction of normal acceleration. What is the direction of inertia force? That is opposite to it. It's opposite. So that is the opposite to it, and that is equal to, what is the value of this? That is equal to mass into acceleration. Mass of a body and the acceleration is normal acceleration. So that is equal to m into an. That is equal to, the sum of all the forces in any direction is equal to 0. If body is under the dynamic equilibrium, the sum of all the forces is equal to 0 in any direction. ठीक है, Fn is equal to 0. नॉर्मल डायरेक्शन 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका. ठीक है, यहाँ पर किसी को भी आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो फोर्स को, कोई से दिक्कत नहीं है. फॉर एग्जांपल in upward directions we consider as the positive forces. R positive, mg at downward minus mg minus man is equal to 0. ठीक है, तो ये इक्वेशन यही बन जाएगी. चेक करो, R minus mg man को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस man हो जाएगा. तो बहुत इक्वेशन आपसे. That is the result from the dynamic equilibrium, and that is the result from the equation of a motion. If the particle is moving on such type of a path, इस तरह के path पर motion कर रहा है, let the particle at this time topmost position, weight of this body is acting downward, reaction is acting in the upward direction, and normal acceleration is always, normal acceleration is always act toward the center of a path. That is a normal acceleration. We can write the equation of motion is equal to F is equal to mass into acceleration, mass into normal acceleration. और कुछ acceleration है ही नहीं, एक normal acceleration है, तो क्या हो जाएगा, take the forces positive in the direction of acceleration. The direction acceleration acting in downward direction. जो भी force downward direction में लगे हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और बाकी सब फोर्स नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है, तो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगा हुआ है, mg, that is a positive. R is acting upward, that is minus, is equal to mass into acceleration. That is the result from the equation of a motion.
Now from the dynamic equilibrium, in the case of dynamic equilibrium, this is a particle, weight of this particle is acting in a downward direction. R is acting opposite to the action, that is R is acting in the normal directions is acting in the vertically upward, and this is the inertia force. Inertia force is always act opposite to the direction of acceleration. तो क्या करना है, जो एक्सेलरेशन है उसको हटा देना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ए है इसको यहाँ से हटा दो, उसकी जगह क्या ले आएंगे हम, इनर्शिया फोर्स ले आएंगे, ठीक है, और इनर्शिया फोर्स करके किस डायरेक्शन में लेके आएंगे, इससे अपोजिट, ठीक है, तो ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इनर्शिया फोर्स किधर एक्ट करेगा, इट विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और इनर्शिया फोर्स किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ ऐड ऑल द फोर्सेस इन द नॉर्मल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का सम 0 कर दीजिए, तो Fn is equal to 0, ठीक है, टेक एनी टाइप ऑफ ए फोर्स पॉजिटिव, लेट अपवर्ड फोर्स इज लेट डाउनवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, एम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया हमने, ठीक है, आप अपवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो, एम इज एक्टिंग डाउनवर्ड, आर इज एक्टिंग अपवर्ड, और इनर्शिया फोर्स m into normal acceleration is acting in the upward direction, but that is the minus is equal to 0, so mg minus r is equal to mass into acceleration, that result from the dynamic equilibrium. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या करना है आपको, जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में मालूम है उस एक्सेलरेशन को वहां से हटाओ और उसकी जगह इनर्शिया फोर्स ले आओ, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में उस इनर्शिया फोर्स को एक्ट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, so that is for the today. In the next lecture we will discuss some problem. Okay, bye.